In this video, we would be discussing about the French society, that is the division of the French society in the chapter French Revolution of class 9th history CBSE. The French society was divided into three states. First state was called the clergy, second state is the nobility, and you can say third state are the common people. So the French society की डिवीजन थ्री स्टेट्स में है, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट. फर्स्ट स्टेट इज द क्लर्जी, सेकंड स्टेट इज द नोबिलिटी एंड थर्ड स्टेट इज द कॉमन पीपल. नाउ पहला स्टेट है क्लर्जी के. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ क्लर्जी? फर्स्ट फीचर ऑफ क्लर्जी इज दे enjoyed privileges by birth, means they are enjoying some of the rights by birth, जन्म सिद्ध अधिकार, कोई बाई बर्थ को राइट मिले हुए. सेकंड, दे आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम पेइंग टैक्सेस, मींस दे डोंट हैव टू पे एनी टैक्सेस, कोई भी टैक्स क्लर्जी को पे नहीं करना. दे एक्सट्रैक्टेड अ टैक्स कॉल्ड थेथिस. थेथिस इज अ टैक्स विच इज कलेक्टेड बाय द क्लर्जी. दे आर कलेक्टिंग टैक्सेस and the name of the tax which the clergy collects is called thethys. Now what is thethys? Now thethys is a tax which is collected by the church. जो टैक्स चर्च कलेक्ट करता that is called thethys, and it is 1/10 of the agricultural production. जितना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होएगा स्टेट में उसका 1/10 चर्च को पे करना होएगा. ये टैक्स इज कॉल्ड थेथिस. Who are clergies? Clergies are the group of persons who are given special functions in the church. They are the people belonging to the church and they have some of the special functions of the church. They are performing some of the special functions in a church, and so these clergy, they collect tax, that is thethys, and this tax is 1/10 of the total agricultural production. The second state, nobility. What are the features of nobility? Same feature, number one, they also enjoyed feudal privileges, means they have some of the rights. They are feudal lords, they have large land, and they are exempt from paying taxes. Here also they are not asked to pay tax, they are exempt from paying taxes. कोई भी अगर टैक्स की बात आएगी पे करने की स्टेट में, इन्होंने टैक्स नहीं पे करना. दे आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम दैट. नंबर 3, एक्सट्रैक्टेड टैक्स कॉल्ड टेल. इन्होंने टैक्स कलेक्ट करना एंड द नेम ऑफ द टैक्स इज टेल. रिमेंबर, क्लर्जी ने जो टैक्स कलेक्ट करना दैट इज कॉल्ड थेथिस, एंड द टैक्स विच इज कलेक्टेड बाय द नोबिलिटी दैट इज टेल. व्हाट इज टेल नाउ? इट इज अ स्पेशल टैक्स विच इज टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट. जो किंग को जाएगा, जो टैक्स डायरेक्टली किंग को जाएगा, दैट इज कॉल्ड टेल, एंड टेल वाज कलेक्टेड बाय द नोबिलिटीज. द थर्ड स्टेट consisted of the common people. Now we have divided common people or the third state into three categories. In first category we have included big businessmen, merchants, and court officials and lawyers. In second category we have included peasants and artisans, and in the last category we have included small peasants, landless laborers and servants. So ये जो इंक्लूशन हमने की हुई है, इट इज अकॉर्डिंग टू रिचनेस. सबसे रिच थर्ड कैटेगरी के, थर्ड स्टेट के रिच पीपल, बिग बिजनेसमैन, इट कैन बी मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स. उसके बाद वाले पीजेंट्स एंड आर्टिशंस, और उसके बाद वाले स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर्स, सर्वेंट्स. ये कैटेगरी आ गई. सो थर्ड स्टेट के फीचर्स क्या हैं? द फीचर ऑफ द थर्ड स्टेट, नंबर 1, पीजेंट्स मेड अप ऑफ 90% ऑफ द पॉपुलेशन. जितनी भी टोटल पॉपुलेशन है उस टोटल पॉपुलेशन का 90% पीजेंट्स का है. ओनली स्मॉल नंबर ऑफ देम हैव लैंड. पॉपुलेशन तो 90% है लेकिन लैंड इनके पास में बहुत कम है, थोड़ी सी है. ओनली स्मॉल नंबर ऑफ देम
they are having land, otherwise they are landless. कुछ लोगों के पास में लैंड है, अदरवाइज ज़्यादातर they are landless peasants. 60% of the land was owned by nobles, church and rich members. 60% लैंड नोबल्स के पास में है, चर्च के पास में है, जो रिच मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट्स के पास में 60% लैंड. एंड मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट स्टेट एंड द सेकंड स्टेट्स वर एग्जाम्प्ट फ्रॉम पेइंग टैक्सेस. जो फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट के मेंबर्स है, दे वर एग्जाम्प्ट फ्रॉम पेइंग टैक्सेस, मीन्स दे वर नॉट, दे डोंट हैव टू पे एनी टैक्स. बाय बर्थ एग्जाम्पशन है, जैसा हमने जो है पहले पढ़ा कि दे वर एग्जाम्प्ट फ्रॉम पेइंग टैक्सेस बाय बर्थ, तो दे आर नॉट अलाउड टू पे टैक्स, और टैक्स वाज नॉट कलेक्टेड फ्रॉम देम. उनसे कोई भी टैक्स कलेक्ट नहीं करना, उनको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है. बाय बर्थ दे हैव द राइट नॉट टू पे द टैक्स. मेंबर ऑफ द फर्स्ट स्टेट एंड द मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट. एंड टैक्स वाज टू बी पेड बाय द थर्ड स्टेट अलोन. जो टैक्स की पेमेंट होएगी स्टेट में, वो सारी थर्ड स्टेट पे करेगी. फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट को कोई भी टैक्स की पेमेंट नहीं करनी है. पीजेंट्स दे हैव टू प्रोवाइड सब एक्स्ट्रा सर्विसेज. जो पीजेंट्स है उनको कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड करनी है. नो व्हाट आर दीज एक्स्ट्रा सर्विसेज? पीजेंट्स दे हैव टू वर्क इन द फील्ड्स एंड हाउसेज ऑफ द लॉर्ड्स. जो लॉर्ड्स है, नोबिलिटी हैं, क्लर्जी हैं, उनके फील्ड्स पे, उनके हाउस पे दे हैव टू वर्क ऑन द फील्ड्स ऑफ द लॉर्ड्स, मीन्स नोबिलिटी, दे हैव टू वर्क देयर. दे हैव टू सर्व इन द आर्मी. The people of the peasants, they have to serve in the army when required, and they have to participate in the building of the roads. अगर रोड्स की कंस्ट्रक्शन हो रही है, इनको जो है कंपल्शन है, इनको वहां पर पार्टिसिपेट करना है. सो दीज आर द फीचर्स ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी. सो अगेन द सम अप ऑफ दिस, द फ्रेंच सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू three states. First state is the clergy, second state is the nobility, third state is the common people. Clergy, they are rich, they are court officials, they have privileges by birth, and they are not allowed to, they don't have to pay any tax, and they collect a tax which is known as the tithes. Similarly, the nobility, they enjoyed feudal privileges, they are exempt from paying taxes, and also they extracted a tax that is known as a tail. And common people, all the burden of paying the taxes lies on the hands of the common people. The tax is to be paid only by the common people. Common people, थ्री कैटेगरीज हमने इसमें डिवाइड की हुई है. बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर्स की एक कैटेगरी बना दी रिचनेस के अकॉर्डिंग. पीजेंट्स एंड आर्टिशियंस की सेकंड कैटेगरी बना दी रिचनेस के अकॉर्डिंग. स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस, लेबर सर्वेंट्स, इनकी अलग कैटेगरी बना दी रिचनेस के कारण. 90% of the population, they are the peasants. Only small number of them they have land, and 60% land was owned by the nobles, church and the rich members of the third state, where the members of the first state and the second state, they are not have to pay any taxes. All the tax burden was on the members of the third state. Along with paying taxes, they also have to serve in army, they have to serve in the houses of the lords, in the fields of the lords, and they also had to participate in the construction of the roads. The next topic, subsistence crisis. The struggle to survive. People, they are facing problem to survive. They are unable to survive. There are certain reasons, and in this part we would be studying those reasons. What are the reasons that people they are not able to survive? So before doing that, we would be doing a concept of subsistence crisis. Subsistence crisis can be defined as an extreme situation where the basic means of livelihood are endangered. एक ऐसा सिचुएशंस है जिस सिचुएशन में लोगों की बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं हो रही है. बेसिक नीड्स आर क्लोथिंग, फूड, शेल्टर, रोटी, कपड़ा, मकान. बेसिक नीड्स लोगों की फुलफिल नहीं हो रही है. उस सिचुएशन को, उस एक्सट्रीम सिचुएशन को हम सबसिस्टेंस क्राइसिस बोलेंगे. ओके, सो सबसिस्टेंस क्राइसिस is a condition in France where the basic needs of human beings they are endangered. People, they are unable to fulfill those. So what led to the subsistence crisis in France? Subsistence crisis क्यों हो गई? क्यों लोगों की बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं हो रही? क्यों पीपल को स्ट्रगल करने में, सर्वाइव करने में स्ट्रगल करना पड़ रहा है? What is the reason for that? The first reason is the rapid increase in population. The population in France
increased from 23 millions in 1715 to 28 millions in 1789. फर्स्ट रीजन रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन. फ्रांस की जो पॉपुलेशन है काफ़ी जल्दी इंक्रीज हुई है, ज़्यादा इंक्रीज हुई है. एंड फिगर के अकॉर्डिंग दैट यू हैव 23 million people was there in 1715 and in 1789 28 million people was there. So this was the rapid increase in population. The population of the country started increasing at a rapid pace. And what was the result of this rapid increase in population? Rapid increase in population led to the increase in demand for the food grains. Demand for food grains increased due to the rapid increase in population. Because population increased, so demand for food grains also increased. एक तरफ population increase हुआ, increase population ने ज़्यादा food grains demand करनी start कर दी, तो demand भी in food grains की increase हो गई. एक तरफ population increase हो गई और दूसरी तरफ demand food grains की increase हो गई. Second reason. Third reason, wages could not match with the rising prices. वेजेस क्या है? जो पर डे इनकम है लोगों की, दिहाड़ी है लोगों की, वो वेजेस है. अर्निंग ऑफ अ पीपल पर डे, जो पर डे पेमेंट हो रही है. एक लेबर काम कर रही है खेत में, उसको जो पेमेंट मिल रही है पर डे, दैट इज अ वेज. वेजेस कुड नॉट मैच विद द राइजिंग प्राइसेस. इट मीन्स जिस स्पीड से प्राइजेस इंक्रीज हुई हैं प्रोडक्ट्स की, उस स्पीड से वेजेस इंक्रीज नहीं हुई. वेजेस वर लेस एंड प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स इंक्रीज्ड विद द इंक्रीज इन डिमांड. जैसे जैसे डिमांड इंक्रीज हुई वैसे वैसे प्राइसेस इंक्रीज हो गई फूड ग्रेन्स की, लेकिन वेजेस तो इंक्रीज नहीं हुई थी. दिस क्रिएटेड अ प्रॉब्लम. द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर पीपल इंक्रीज्ड. देयर वाज एन इंक्रीज इन अ गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर पीपल. ड्रॉट ऑल हेल टू नेचुरल डिजास्टर्स. ड्रॉट में सूखा पड़ जाना एंड हेल में बर्फबारी हो जाना, स्नोफॉल हो जाना. ड्रॉट और हेल मेड द सिचुएशन वर्स्ट. ड्यू टू ड्रॉट और हेल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स फर्दर डिक्रीज्ड. पहले फूड ग्रेन्स की प्रॉब्लम थी, पहले ही जो है कि इंक्रीज इन पॉपुलेशन की प्रॉब्लम थी. ड्यू टू द इंक्रीज इन पॉपुलेशन पीपल दे स्टार्टेड डिमांडिंग मोर एंड मोर फूड. And because of the shortage of food, the prices of food grains increased. Now, due to hail and drought, there was a food failure. There was a crop failure. Because of the crop failure, there was a shortage of food. Because of the shortage of food, further price rise in the food were seen, and this led to the subsistence crisis in France. अब क्वेश्चन है कि what is subsistence crisis and what led to the subsistence crisis in France. अगर ये क्वेश्चन आता what is subsistence crisis and what led to the subsistence crisis in France, अपना ये आंसर पूरा होएगा जो हमने डिस्कस किया. सबसे पहले subsistence crisis की मीनिंग, what is subsistence crisis, we have to write the meaning of subsistence crisis एक पैराग्राफ में. फिर हमने पैराग्राफ चेंज कर लेना. फिर हम लिखना what led to the subsistence crisis in France. हमने पैराग्राफ चेंज करके लिखना reasons for subsistence crisis in France. और ये जो हमने 4 रीजंस डिस्कस किए, ये सभी रीजंस हमने लिख देने कि these were the reasons for the subsistence crisis in France.